Guru-disciple relationship is an everlasting relationship. From Amma's Guru Purnima message, if we try to count from the beginning of the Guru-disciple tradition, tens of thousands of Guru Purnimas must have been celebrated by disciples. A Guru plays an important role in molding the life of a student. The Indian tradition widely accepts the positive influence of Guru in a student's life. A teacher is considered to remove darkness from a student's life. A blessed student is one who receives the blessing of his or her Guru. Lastly, I would like to say that a Guru always helps one to get knowledge and stands beside students when they have problems. Happy Guru Purnima. हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे तुझ बिन रोग रज़ाया दा ओढ़ण तुझ बिन रोग रज़ाया दा ओढ़ण नाग निवास सदरेणा नाग निवास सदरेणा मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसा यदा सेना बिंग कसा यदा सेना मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे यारण दा सानू साथर चंगा यारण दा सानू साथर चंगा पट खेड़िया दा रेणा पट खेड़िया दा रेणा मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा. The emotional idol of Guru is the origin of meditation. His foot is the origin of worship. The sentence he utters is the Mool Mantra. His grace is the root of salvation. Om Namah Shivaya everyone. I am Pyusha Rajas and on the behalf of the Amrita family, I wish you all a very happy Guru Purnima. Thank you. Bye.
कैसे चुकाऊं मैं मूल। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मूल। लाख कीमती धन भला, लाख कीमती धन भला, गुरु है मेरा अनमोल, गुरु है मेरा अनमोल। When one finds the true Guru, one conquers half the world. My dear teachers, your blessings enriched my life. It is an incomparable journey where the Guru leads you from the visible to the invisible, from the material to the divine, and from the ephemeral to the eternal. You introduced me to myself and showed me the right way. Thanks for making me who I am. Wish you all a very happy Guru Purnima. सर्वलोकानां वितते भवरोगिणां विशते सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। निधनपदये नमः, निधनपदाम्बिकाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः, ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः, हिरण्याय नमः, हिरण्यलिङ्गाय नमः, सुवर्णाय नमः, सुवर्णलिङ्गाय नमः, दिव्याय नमः, दिव्यलिङ्गाय नमः, भवाय नमः, भवलिङ्गाय नमः, शर्वाय नमः, शर्वलिङ्गाय नमः, शिवाय नमः, शिवलिङ्गाय नमः, ज्वलाय नमः, ज्वललिङ्गाय नमः, आत्माय नमः, आत्मलिङ्गाय नमः, परमाय नमः, परमलिङ्गाय नमः। एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गं प्राणिमन्त्रं पवित्रं सत्यो जातं प्रपद्यामि, सत्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भवस्व मां, भवोद्भवाय नमः, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, भलविकरणाय नमो, भलाय नमो, भलप्रमदनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमः, मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
teachers, and thank you for making us a good human being. Happy Guru Purnima to all gurus and teachers. A guru is a person who removes all darkness from one's life and takes us to the right path. Guru Purnima is a spiritual festival and a very essential festival celebrated all over India. This day is celebrated in the holy remembrance of Guru Vyas, who has written the epic Mahabharata, the 18 Puranas and the 4 Vedas. On this day, students revere their gurus. So, my humble pranam to lotus feet of all gurus and teachers. Thank you. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश आदि सभी देव हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मेरा शत शत नमन है। ओम नमः शिवाय। आज मैं अनुश्री 8वीं ब की छात्रा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। भारत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने का कारण: गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन को याद कर उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत, 18 पुराण एवं 18 उप पुराण और ऐसे बहुत से महाग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। इन्होंने लोक कल्याण के लिए बहुत कार्य किए थे, इसलिए हमारी परंपरा अनुसार उन्हें गुरु का पद प्राप्त है। गुरु शब्द की व्याख्या और गुरु का जीवन में महत्व। गुरु शब्द 2 शब्दों से बना है, गु तथा रु। गु का अर्थ अज्ञान, अंधकार एवं तमस से है और रु का अर्थ से निकालने या बचाने वाला है। अतः गुरु शब्द का अर्थ अंधकार, अज्ञान एवं तमस से निकालने या बचाने वाला या वाली व्यक्ति है। गुरु एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो अपने शिष्य के सर्वांगीण विकास में बहुत मदद करते हैं। गुरु अपने शिष्य को सभी विषयों में शिक्षा देते हैं और उनके नैतिक मूल्यों को बढ़ाते हैं। वे हमें जीवन की सभी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं और अपने शिष्य को सफलता का मंत्र बताते हैं। हमारे माता पिता ही हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म से हमें जीवन जीने का ढंग बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप उन्हें गोविंद दियो बताए। कबीर जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो हमें सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में शिक्षा दी है। गुरु का हमारे जीवन में महान योगदान है और वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस कारण हमें गुरु पूर्णिमा के दिन ही नहीं बल्कि वर्ष के सभी दिनों में उनका आदर करना चाहिए। इस अवसर पर मैं अपने जीवन के सभी अध्यापक गण एवं गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवस्मृताः। The one who inspires, one who informs, one who recites, one who guides, one who teaches, and the one who awakens. These are the 6 gurus to remember. Guru, I believe, are like candles. They light themselves to light the path of others.
I believe that they are the most important and responsible members of the society. They teach mind to think, hands to create, and heart to love. On this occasion of Guru Purnima, I owe gratitude to each Guru across the globe for their guidance and the selfless love that they shower on their students. Thank you and a very happy Guru Purnima. गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. The Guru disciple tradition is a unique feature of the Indian culture. Guru Purnima, also known as Vyas Purnima, is celebrated as a mark of respect to the Guru. Guru, a teacher, expert, master, or guide who dispels the darkness and takes us towards the light. Guru is a mirror who shows us our true selves and helps us to elevate ourselves. A Guru is the biggest blessing one can receive from the Almighty. No one can even think of being successful without a Guru. The role of a Guru in one's life cannot be described in words. On this auspicious occasion, from the bottom of my heart, I salute all my teachers who have made my journey wonderful and have helped me to evolve into a better you. धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही हो वो पावन नूर जिनसे रोशन है ये जमाना. गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू एंड ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. आज मैं दीपिका डागर कक्षा 7वीं ब की छात्र आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर एक श्लोक सुनाने वाली हूँ. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. धन्यवाद. Om Namah Shivaya. Happy Guru Purnima to all my respected teachers, Principal Ma'am and Amma Ji. I offer my pranams to the lotus feet of Amma. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Thank you to all my teachers who motivated me, who gave knowledge to me and stand beside me. Thank you. Om Namah Shivaya. Today I, Gaurangi Chaudhary of class 7A, will speak few lines on Guru Purnima. This festival is traditionally observed by Hindus, Buddhists and Jains to reward their chosen spiritual teachers, leaders and express their gratitude. The festival is celebrated on the full moon day Purnima in the Hindus month of Ashada. Thank you. Stay home, stay safe. Om Namah Shivaya everyone. I am Ishita Singhal and will tell you a little information about Guru Purnima. Guru Purnima is a traditional Indian festival of the Hindus and the Buddhists. The occasion is celebrated in the Indian subcontinent from ancient times. It is celebrated on the full moon day in the month of Ashad according to the Hindu calendar. It is celebrated in the holy memory of Guru Vyas, the ancient saint who compiled the 4 Vedas, wrote 18 Purans, the Mahabharata and the Srimad Bhagavad Gita. The day is also known as Vyas Purnima.
A guru plays an important role in molding the life of a student. The Indian tradition widely accepts the positive influence of a guru in a student's life. A teacher is considered to remove darkness from a student's life. On this day, Hindus show much respect to their gurus. Several programs and cultural performances are organized by spiritual organizations on this day. Celebration also includes Guru Puja in many places. The life and teachings of holy masters are recalled. Students are encouraged to follow the teachings of spiritual gurus. Students express their gratitude by thanking their teachers. Guru Purnima is also celebrated in many schools, colleges, and universities. Thank you so much, our dear teachers or gurus, for removing the darkness from our lives, supporting us, and teaching us how to explore the world. Thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru Ne Namah. On the special day of Guru Purnima, I wish all my respected teachers and gurus a very happy Guru Purnima. Guru Purnima is also known as Vyas Purnima, marks the birthday date of Ved Vyas. It is a tradition dedicated to all the spiritual and academic gurus. A guru not only teaches us and gives us the knowledge but also shows the right path to lead our life. He is the person to enlighten ourselves and guides to lead a prosperous life. Thank you, and I wish again happy Guru Purnima to all my teachers and gurus. Thank you. Om Namah Shivaya. Namaskar everyone, my name is Kritika and today I am going to talk about Guru Purnima. Guru Purnima is also known as Vyasa Purnima. It marks the birthday of Ved Vyasa. It is a tradition dedicated to all the spiritual and academic gurus who are evolved or enlightened humans ready to share their wisdom with very little or no monetary expectations based on Karma Yoga. It is celebrated as a festival in India, Nepal, and Bhutan. This festival is traditionally observed by Hindus, Buddhists, and Jains to revere their chosen spiritual teacher or leader and express their gratitude. This festival is celebrated on a full moon day or Purnima in the Hindu month of Ashad, June to July. It is known in the Hindu calendar too. This festival was revived by Mahatma Gandhi to pay tribute to his spiritual teacher or guru Srimad Rajchandra. Now, thank you everyone and have a great day ahead. Om Namah Shivaya. My name is Manya Kapil and I am from class 6B. Today is Guru Purnima and I am going to share some lines on Guru Purnima. Guru Purnima is also known as Vyasa Purnima, marked the birthday of Ved Vyasa. It is a tradition dedicated to all the spiritual and academic gurus who are evolved or enlightened humans ready to share their wisdom with very little or no monetary expectations based on Karma Yoga. It is celebrated as a festival in India, Nepal, and Bhutan by Hindus, Jains, and Buddhists to revere these chosen spiritual teachers, leaders, and express their gratitude. This festival is celebrated on the full moon day, Purnima, in the Hindu month of Ashtha, June-July. As it is known in the Hindu calendar, the festival was revealed by Mahatma Gandhi to pay tribute to his spiritual guru, Srimad Rajchandra. Thank you and Om Namah Shivaya. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru. My humble pranam at the lotus feet of Sadguru Amma. Today, on this special occasion, I, Muskan Parida of class 18, would like to say a few words on Guru Purnima. Guru Purnima in India has always been a special occasion for the unique relationship between the teachers
and their students. Guru Purnima is also known as Vyasa Purnima. This day includes Guru Puja on the Purnima day in the month of Ashad. On this day, we, the students, express our gratitude to the life and teachings of our spiritual gurus. Do you know that the Guru word has a deep meaning inside it? Gu means darkness and Ru means removal. It means that it is the Guru who removes all the evil thoughts from a child's mind and teach them the correct way of living a life. As you know, the God cannot come everywhere to teach us the values, right? Then who is it who teaches us these values? It is our Gurus. They teach us these values. Do you know that the blessings of our Gurus are enough for a successful life? Never disappoint your Gurus. I, on behalf of every student, want to thank to all the Gurus for supporting us throughout our life till now, for teaching us the correct meaning of life, for making us strong enough to face each and every problem that may come in our life. I, with my full heart, want to thank to all my Gurus. Now, I would like to end my conversation over here. I once again thank to all my Gurus. Have a nice day ahead. Thank you, and once again, Happy Guru Purnima. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मन में दर्शन
विधाकर छात्र यह भजन अपने गुरुजनों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम कौन कहती है भगवान आते नहीं मीरा के जैसे बुलाते नहीं केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं हमें शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहती है भगवान सोते नहीं हम यशोदा की जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहती है भगवान नाचते नहीं हम गोपियों की जैसे नचाते नहीं हम गोपियों की जैसे नचाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। यह भजन मेरी ओर से सभी गुरुजनों को समर्पित है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. On the occasion of Guru Purnima, I thank all my respected teachers for their teachings and love. This mantra is dedicated to all my respected teachers. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Namah Shivaya. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Om Namah Shivaya. Happy Guru Purnima. Guru Purnima is a festival celebrated in the honor of our teachers who remove darknesses and invoke the positivity in the life of their students. And certainly, the teachers of Amrita Vidyalayam have succeeded in each way to help their students in each path of their life. Thank you so much, teachers, for always being there. Although on this day we cannot be together with each other, I hope you are fine and healthy and perfect as you were there with us in the school. We all love you so much. To the world, you must be the teachers, but to us, the Amritians, you are our heroes. Thank you. मन्दस्मित श्रीमुखीम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
लेकर जब आए पहली बार, थामे हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और समझते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामे हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। ओम नमः शिवाय। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विश्व के समस्त गुरुजनों को मेरा शत शत नमन। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान, एवं रू का अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर जाता है। इस शुभ पावन पर मैं आप सभी के सामने अपने गुरुजन का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। गुरु चरणम सद्गुरु चरणम अमृतानंदमयी चरणम, गुरु चरणम भव भय हरणम अमृतानंदमयी चरणम, गुरु चरणम सद्गुरु चरणम अमृतानंदमयी चरणम, गुरु चरणम भव भय हरणम अमृतानंदमयी चरणम, अखिल जनार्चित सच्चरणम जनिमृतिनाशक श्री चरणम, अखिल जनार्चित सच्चरणम जनिमृतिनाशक श्री चरणम, समस्त देवी देवमयं सद्गुरु चरणं प्रणमामि सदा, समस्त देवी देवमयं सद्गुरु चरणं प्रणमामि सदा, गुरु चरणं सद्गुरु चरणं अमृतानंदमयी चरणं, गुरु चरणं भव भय हरणं अमृतानंदमयी चरणं, अमृतानंदमयी चरणं, अमृतानंदमयी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Om Namah Shivaya. I am Varidhi Chaudhary of class 10A, and today I am here to speak on the auspicious occasion of Guru Purnima. A guru is a person who provides his or her disciples with knowledge and helps them in their hour of need. Guru Purnima is celebrated by devotees to worship and thank their gurus for enlightenment. The word guru is derived from two Sanskrit words, gu and ru, of which the former means ignorance and darkness in a person and the latter means the person who takes away or removes the darkness from that person's life. This day is celebrated with great joy and vigor in all the branches of Amrita Vishwa Vidyapeetham by performing Pada Puja and thanking their parents who are their first gurus, and secondly their teachers who help them by
teaching them and enlightening them. As we Amritiyans follow the Guru Shishya Parampara, we chant a special prayer on Wednesdays, which is as follows. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे Om Namah Shivaya. My name is Tanishu Preti, first class B. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Happy Guru Purnima. Om Namah Shivaya. Happy Guru Purnima. क्या आप जानते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? आइए हम अपने गुरु को याद करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय।
शिव हैं। यहाँ तक कि परमात्मा परब्रह्म भी गुरु हैं। ऐसे मेरे महान गुरुओं को मेरा नमस्कार एवं धन्यवाद। Om Namah Shivaya. Happy Guru Purnima to all teachers of the school Amrita Vidyalayam. Thank you. ध्यायमोदग नाम कुण्ठनवती तेजो महीनैष्ठिकीं स्निग्धापां विरोकिनीं भगवती मन्दस्मितश्रीमुखीं पासल्यामितपर्शिनीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामां मधुसिद्धसुध्यम् अमृतानन्दापिकामीश्वरी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Thank you and happy Guru Purnima to all. Om Namah Shivaya. Today is Guru Purnima. The festival of Guru Purnima is celebrated by Hindu as well as Jain. We should respect our Guru. Guru has an important place in our life. So I am dedicating some lines to our Guru. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Tvameva Mata Cha Pita Tvameva, Tvameva Bandhusya Sakha Tvameva, Tvameva Vidya Kaviram Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Saraswati Namastubhyam Vardhe Kamarupini Vidyarambham Karishami Siddhe Bhavatu Me Sada. Thank you. Om Namah Shivaya. Guru Purnima is celebrated by Hindus, Buddhists and Jains every year. On the full moon day of the Shaka Samvat. On this day, people worship their teachers and gurus for guiding them towards the right path. Thank you all my teachers for your guidance. Shivaya, today I will speak few words on Guru Purnima. Date fetch resolves on this day shine as very embodiment of teaching. Thank you and Om Namah Shivaya and happy Guru Purnima all of you. Happy Guru Purnima to all of you. Om Guru Brahma Guru Devo Maheshwarah Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Tvameva Mata
त्वमेव त्वमेव मण्डुष्ट सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. Derek, do you know why do we celebrate this day? Yes, Myra, we celebrate this day to honor our teachers and gurus. संत कबीर जी ने लिखा है, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष. अर्थात गुरु के बिना ज्ञान का मिलना कठिन है. Thank you. गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं. हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू. ओम नमः शिवाय. Om Namah Shivaya. My name is Hitakshi Bhardwaj. A teacher is a person who helps us to learn and progress in our life. Teachers are the gift of God that make our careers and guide us towards success. In words of Sant Kabir, the value of teacher is more than in comparison to God, and we must be thankful to our teachers. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Thank you. Namah Shivaya. Happy Guru Purnima to all of the teachers in the school Amrita Vidyalayam. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Tameva Mata cha Pita Tvameva Bandhu cha Shika Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Thank you. ओम नमः शिवाय मैम. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. थैंक यू एंड ओम नमः शिवाय. गुरु पूरब प्रथम माँ जिसने जन्म दिया, द्वितीया धरती माँ जिस पर पहले पड़े, तृतीया पिता जिसकी उंगली थामी, चतुर्थ शिक्षक जिसने ज्ञान दिया, पंचम आध्यात्मिक जिसकी कृपा मिली. इन 5 गुरुओं की आशीर्वाद से जीवन सार्थक है, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है. नमः शिवाय. मेरा नाम निधि मिश्रा है. आज मैं एक गुरु मंत्र गाने जा रही हूँ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा. धन्यवादः.
धन्यवाद। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। I'm Anaisha Arora. Today is Guru Purnima, full moon day of Ashad Mas. Today we take blessing of teachers and gurus. Om Guru Bhyo Namah. Om Namah Shivaya. Happy Guru Purnima everyone. On this special day of Guru Purnima, I want to thank my guru, teacher and parents who helped me grow and transform my life. Thank you. Om Namah Shivaya. Happy Guru Purnima to all my teachers and friends. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. मेरे गुरुजी के लिए प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। Om Namah Shivaya. Today's
2020, the spiritual festival of Guru Purnima is celebrated by Hindus, Jains, and Buddhists in India, Nepal, and Bhutan. It always falls on the full moon of the Hindu calendar month of Ashadh. It is celebrated as a mark of respect, dedication, and gratitude towards our gurus and teachers, and receiving their blessings. Many temples observe Vyas Puja on Guru Purnima as a mark of respect to Maharishi Ved Vyas, the author of great epic Mahabharata. The term Guru derives its meaning from the combination of two Sanskrit words, Gu meaning darkness and Ru meaning a person who eliminates darkness. Today on Guru Purnima, I bow down with respect to my first Guru, my parents, who have inspired, taught, guided, supported, and always believed in me. And I bow down to all my school teachers, my parents in school, for imparting immense wealth of knowledge, faith, wisdom, confidence, discipline into my life. Let us make an oath to follow the steps of our gurus in our lives. Om Namah Shivaya and a blissful Guru Purnima to all my gurus. ओम नमः शिवाय। अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं गुरु, सही रास्ता दिखाते हैं गुरु, इंसान को इंसान बनाते हैं गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। ओम नमः शिवाय। और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा डे। ओम नमः शिवाय मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू एंड ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Guru word means one who removes unworthiness of his student by highlighting them. This day is dedicated to Guru or teachers. Guru has a very important place in our life. This year, this festival was celebrated on 5th July 2020. Om Namah Shivaya.
विश्वसकातु त्वमेव त्वमेव विद्या भविडं स्वं त्वमेव वरवंश देवा श्री कृष्ण सच्चिदानंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद पारब्रह्म पूर्ण परमात्मा पारब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा सदा सुख ले हे आत्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद परब्रह्म पूर्ण परमात्मा परब्रह्म पूर्ण परमात्मा शिवाया मैम, गुरु होते सबसे महान, जो देते सबको ज्ञान। आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा और टू माय टीचर्स। Happy Guru Purnima to my parents and teachers. Guru is made by two Sanskrit words, Gu plus Ru. Gu means darkness and Ru means removal of darkness. Guru is named because Guru remove darkness from our lives and teach us right things. Thank you and Happy Guru Purnima. Om Namah Shivaya. I am Anna and I am of class 30. Happy Guru Purnima to all my teachers, my Guru, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru Ve Namaha. Thank you. Om Namah Shivaya. Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru Ve Namaha. The one who inspires, the one who informs, the one who recites, the one who guides, the one who teaches, the one who awakens. These are the 6 gurus to remember. Thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru
Namah Shivaya. It's an incomparable journey where the Guru leads you from the visible to invisible, from material to divine, from ephemeral to eternal. Thanks for being my Guru. Happy Guru Purnima. जय गणेश देव माता जगी पार्वती पिता महादेव एक दंड दयावंत चार हुसधारी माते पासी नक सोए मूसिक सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डन के भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देव माता जगी पार्वती पिता महादेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरु ने नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुरवे नमः श्री गुरुरवे नमः रवे नमः जय गुरु जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा बोलो चार भुजाधारी जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी। ओ श्री गणेश महाराज की जय हो। Guru Brahma
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम नमः शिवाय। I study in class 30. Today I am going to chant Guru Mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Guru was mean one who remove unawareness of his children by enlightening them. This day is dedicated to Guru or teacher. The celebration is observed by Hindu, Buddhists and Jains. Thank you.
गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. I am Anna of class 30. Happy Guru Purnima to all my teachers, my gurus. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. My name is Damandeep Singh from class 1st C. Today I am going to recite a mantra on Guru Purnima. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah, Tasmai Shri Guruve Namah. Teacher means a gift of God. The value of teacher is more in the comparison to God. And we must be thankful to our teacher. Guru Govind do khade kaaki lagu paay. Guru Govind do khade kaaki lagu paay. बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए गोविंद दियो बताए। थैंक यू। खड़खड़ाते हैं थाम लेते हैं वो खो जाए राह तो राह रोशन करके वो कभी मुस्कुराते हैं वो कभी गुस्सा करते हैं वो हमें है यकीन हमसे प्यार करते हैं वो दिए की छोटी सीप में मोती ये दुनिया इतनी हसीना होती हमें भी सलीका न होता जीने का तरीका न होता वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी के भूलेंगे ना तुमको हम कभी छोटे से पाँव थे नन्ही सी आँखों ने जब देखा
था मालूम कि तुम ही तो दोगे पहचान हम सभी को, इसलिए शुक्रिया दिल से तुमको। दिए की ज्योति सीप में मोती, ये दुनिया इतनी हसीना होती, हम में भी सलीका न होता, जीने का तरीका न होता। वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, के भूलेंगे ना तुमको हम कभी। लड़खड़ाते हैं हम, थाम लेते हैं वो, खो जाना है तो राह रोशन करते वो। छोटे छोटे हाथ, छोटे से पाँव थे, नन्ही सी आँखों ने जब देखा था तुम्हें, वो टीचर तुमसे ही पाया है सभी, के भूलेंगे